तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इनर पीस और आउटर सक्सेस? Inner peace. Okay. Favorite meditation spot? Vrindavan. I know that answer. Okay. Sunrise or sunset contemplations? Sunrise. Always. Heart or mind in spiritual journey? Heart. Absolutely. Okay. Simplicity or elaborate rituals? Simplicity. Okay. Nature walk or temple visit? Oh, ये तो बहुत वृंदावन एक मंदिर है तो मैं कहूँगी नेचर वॉक और No. वृंदावन एक फॉरेस्ट है. Okay. But anyway, this is nothing like you can say both. That's not like only any one you have to choose, but that's how. Okay, next. Silent retreat or group chanting? Group chanting. Okay. Universal truth or personal revelations? Universal truth. Okay. Light worker or seeker of light? Seeker of light. Okay. Okay. Aloo paratha or salad? आलू पराठा. Okay, great. I thought you will give this answer being a Punjabi family. आलू पराठा कौन छोड़ेगा? Absolutely. सैलेड तो खाते ही रहते हैं. हाँ, correct. India और कीनिया? Tough choice. ओहो. भाई ये तो वो आंसर है. अगर मैं कीनिया बोलूंगी तो इंडिया लोग खराब लगेगा. अगर इंडिया बोलूंगी ठीक है यही बोलते हो दोनों. बट वैसे मेरा दिल तो वृंदावन में ही है. हाँ यार, एब्सोल्युटली, वो तो होना ही है. श्री कृष्णा और राधा? राधा रानी. ग्रेट. तो आपने बहुत. हेलो डियर व्यूअर्स एंड फेलो सीकर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, वेलकम यू all to my YouTube channel Spiritual Talk by TT. I am delighted to welcome a very special guest to our Spiritual Talk show today. I discovered our esteemed guest on the vibrant platform of Instagram, where she is known and loved as Harikanta Devi Dasi, with a dedicated following and a heart full of devotions. Harikanta Devi Dasi is a renowned Krishna devotee. Her profound insight and the inspiring interactions she shares on social media have touched to heart of many. And even I seen those posts and I really loved it, and then I thought I should interact, and I was trying to approach her long, but unfortunately I think either you were not reading those messages, then I started commenting on the your live post, so might be some click, I don't know, but that's how I approached. And what makes today's episode even more special is that Harikanta Devi Dasi joining us all the way from to Kiniya, share us spiritual journey and insight. So first of all viewers, हरिकांता देवी दासी जी का जन्म कीनिया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनकी उच्च शिक्षा जो है यूएसए और यूके में हुई, और आप जो है बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं. So first of all, I would like to Harikanta Devi Dasi ji, warm welcome to you in my talk show. Hare Krishna. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर आपने इतना अच्छा स्वागत किया मेरा. मैं आपसे कोटि कोटि माफी मांगनी चाहती हूँ कि आपके आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड जल्दी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि क्या होता है हमें बहुत मैसेजेस आते रहते हैं इंस्टाग्राम में. बहुत बड़ी फैमिली है हमारी और वो बढ़ रही है भगवान और गुरु की कृपा से, ताकि हम ये सेवा कर सके. बट कृष्ण इतने दयालु है कि हमको जुड़ाया ताकि हम ये आगे सेवा कर पाए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर सर्विस.
So my apologies, we could not reach out to you immediately, but we tried our best and we'll keep trying to serve यस everyone. यस। तो And मेरा thank भी, you so much या, for inviting me. बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली मेरा भी मकसद यही है हरिकांता जी कि हम एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी बनाएं, लोगों को जोड़ें। मैं भी यूरोप में हूँ, बेस्ड आउट इंडिया। मेरा भी कल्चर बैकग्राउंड, फैमिली से, हम ऐसे फैमिली से आते हैं कि जहाँ हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पूजा पाठ करनी चाहिए। और आपके ऊपर भी आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब जो है, कोई एक डिवाइन जो है, कोई एक शक्ति, कोई एक पावर आपको ड्राइव करती है। तो हम भी उसी थॉट प्रोसेस से आए हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि सोशल मीडिया पर हम बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में देखते हैं, बट ऐसे लिटरेचर और ऐसे वीडियोज, ऐसे कन्वर्सेशन की कमी है जहाँ पर कि हम इस तरह की अवेयरनेस को जगा सकें। और आज के इस जो प्रॉब्लम्स हैं, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन अक्रॉस द ग्लोब, यू कैन सी लॉट ऑफ इश्यूज आर across. So there we need some sense of spirituality, and that is the only objective which I am trying to pull and get these conversation on my channel. And slowly we will grow. That is not my aim, but the aim is to have these conversation online. So let's start, begin with my first question. तो मैं जानना चाहूँगा कि how was your childhood, your early life, and how was your background of your parents, and your root in India, what was that, where it is, and ये सब चीज़ें आपको कंट्रीब्यूट करती हैं भक्ति के मार्ग में आने में। तो वो कैसे हुआ, ये थोड़ा सा आप समझाइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन। तो मेरा जन्म एक छोटे से देश में हुआ। आई वॉज बोर्न इन नैरोबी, केन्या। नैरोबी यहाँ की कैपिटल सिटी है और यहाँ पे मेरा जन्म हुआ। यहाँ पे मेरी चाइल्डहुड की पढ़ाई हुई। I was born into a Sharma family and a very strong Punjabi family. So initially when I was younger, we used to come to the Hare Krishna temple and the ISKCON community here. But my grandfather was very fond. वो बहुत शौकीन थे कृष्ण भगवान की paintings. He used to love Krishna Bhagwan's paintings, and he would bring them home, and he used to decorate the temple and the home with the paintings that the ISKCON devotees would ask him to purchase, and he would be a great donor. So we used to come to the temple, but हम जब छोटे थे, हम एक बहुत कार्मी background से आते थे, by which I mean because I am from a strong Punjabi family, so like meat eating, alcohol, all this was there because they were businessmen. Yeah. My great grandfather and my grandfather was a very strong businessman, and they were mostly in the gold industry. So when they were in India, they moved from India and they came to Kenya when the British were ruling here. And at that time, my great grandfather was involved in the gold ministry in Kenya. So basically, all the gold that used to come through Kenya would go through his treasury. And so our family was a lot businessman because they had their gold shops and they were into gold jewelry, and that was the business. And then eventually, they all left, but my grandfather anchored himself in Kenya. And he ventured into many other businesses like property and electronics, and from that he built an empire. So I was born in Kenya, I was raised in Kenya, that's why I can also speak Swahili, which is यहाँ की भाषा है Swahili। जैसे इंडिया में हिंदी होती है, केन्या में हम स्वाहिली बोलते हैं। Okay. तो जब मैं छोटी थी मेरे पापा का भी बिजनेस था, और हमने ऐसे नहीं है कि मैंने सिंपल लाइफ देखी है, वेरी एवरीथिंग arranged by our parents, but we also had many struggles, me and my brother, because we were the only two children, and we saw a lot of struggle, especially when we were young. मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था। और तब बहुत difficult हुआ था क्योंकि I was just 7 years old or 8 years old, so that was the first, I would say, a very challenging situation I was put in at a young age. मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे पता चला कि मम्मी को कैंसर है, for a while we were shocked. मेरे grades पे बहुत effect होता था क्योंकि I used to do top, but when we discovered, I think even my brother as well, when we discovered that we don't know whether our mother is going to come back,
but she came back with Krishna's mercy and wonderful doctors in India. Her treatment was done in India. But Okay. at that time, my grades dropped and it was very challenging. And, you know, when one parent is taken out of the picture, it becomes difficult. क्योंकि माँ बहुत जरूरी होती है बच्चों के लिए. As long as father is very important. But जो माँ होती है वो बच्चों के लिए it's like a friend, and Absolutely. उसके साथ गुस्सा भी हो सकते हो, उनके साथ प्यार भी मिलता है, वो सब कुछ माँ से मिलता है. तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था. तो मेरे बचपन मतलब चैलेंजिंग सिचुएशंस भी हुई हैं, और आई हैव बीन आल्सो लाड, वो क्या कहते हैं, लाड से भी पाला है हमको. मतलब हमको सब कुछ मिलता था, भगवान की कृपा थी. हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की. वी स्टडीड इन अ ब्रिटिश करिकुलम स्कूल इन केन्या, जो यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल है, ऑस्ट्रेल एकेडमी. और मैंने ब्रिटिश करिकुलम किया था, like till A levels, and then after that I decided I would go to US. So Okay. Kenya was like a good nurturing background, you know, this is where I'm anchored. But then I left to America, where I spent almost a decade, and then also I spent some time in London in the ashram there. Okay. Okay. So your higher education you have completed in US, right? Yes, in US. Okay. So I after finishing my O levels and A levels in Kenya, and then I decided I want to go to America, because I was brought up in this environment where I wanted to do something different from the generation, which was, there was never been a girl who had traveled abroad to study, and I was very academic. I was also part of, when I was younger, I was into the chess association in Kenya. So I used to play chess regularly. And because I became good at it, I was selected to go and play in the Olympics. But my mother had a different plan for me. She didn't want me to go in the Olympics. She wanted for me to focus more on my academics. Okay. So chess was coming up, but then that got out of the picture. And then I went to America. And there I did my undergrad in the University of Michigan. And I spent 4 years there, and I graduated from University of Michigan. After which, after graduating, you have to do some kind of work. So I immediately got a job in California, and I moved to San Francisco. And then while I was working, I did a graduate certificate course in Stanford, and that is when I went to that school. So I moved from Michigan, which is very cold, to Stanford in California. Stanford University. Yeah. Okay. So how long you been in the job during that time after your education? So it is not like I have not worked. I worked for quite some while. I worked for like 1.5 years in the US. Then I decided I would come back to Kenya. When I came back to Kenya, I also worked for 1.5 years. But while I was working, Krishna was arranging that every time I went to work, I realized that I'm not made for the corporate world. I'm made for some different perspective. I remember I used to work in Mission District. Mission District is very, वहाँ की जैसे बहुत बिजीएस्ट स्ट्रीट होती है सैन फ्रांसिस्को में, उसको फाइनेंशियल एरिया कहते हैं. तो मैं उधर काम करती थी, और मेरी ऑफिस भी वहाँ थी. बट एक दिन ऐसे क्या हुआ, वन डे इट वाज 5 o'clock एंड वी जस्ट केम आउट ऑफ वर्क, एंड मतलब पूरी स्ट्रीट, द होल स्ट्रीट वाज फुल ऑफ पीपल. पूरी स्ट्रीट लोगों से भरी हुई थी. बट जब मैं नीचे आई, मुझे ऐसे लगा, मैं अपने आसपास देखने लगी. आई स्टार्टेड लुकिंग ऑल अराउंड, एंड हियर आई एम ऑन मिशन स्ट्रीट. मतलब अमेरिकन ड्रीम यही होती है, अच्छा काम, पढ़ाई, अच्छा घर, सब कुछ है. बट फिर भी in my heart, somewhere in my soul, there was like some kind of emptiness. I was just standing, and matlab aas-paas hazaron log mere, but I felt so alone. I felt like I'm alone. तो फिर मैंने कहा कि बस जिंदगी का यही मतलब है कि this is life. Is this the purpose of life? So on Mission Street, I actually decided this cannot be the mission of my life. There has to be something more. So then after that, I decided to go to see my Masi, who was living in another state. And then even there, I had certain realizations. I was working. I did some experiments with businesses, and I wanted to do startup businesses. I did that in America. And Krishna made arrangement for them to not work out so good.
And then eventually I came back to Kenya. So I worked again, and I was in the marketing industry, and as it is, just marketing agencies में होता है, you have to attend the parties, or parties में होता है कि alcohol, meat eating, and I am this devotee who's given up all these things. तो एक दिन क्या हुआ, one day I was at work and I came back from work, and मेरी नानी, I remember मेरी नानी और मेरी मम्मी घर पे थे, and I came home and I just started crying. So मेरी नानी कहती, you don't need to do all this, सब बंद कर दे, ये सब काम जाने की जरूरत नहीं है. And फिर मुझे realize हुआ, जब मैं I was crying, I was realizing कि मैं नहीं कर सकती हूँ corporate. My life is not meant to do some corporate job. There has to be some more, there has to be a bigger mission for me. There has to be a bigger purpose in my life. And then so basically I have worked in the corporate world. I have done when I was in university, I've also done very low jobs, which is like working as a janitor to get that experience in the US. And then I also worked as a student research. So I've explored so many different jobs, It is not like I didn't have any exposure as an intern or working. I got the taste of work. But for me, I felt this is not what will define my mission of life. So I was looking for a higher taste, like they say in Krishna consciousness. You're looking for a higher taste, and you feel unsatisfied, unhappy, even if you have conquered the American dream. I really felt there's something more to life. Okay, great. So related to this, I just asking, if you look back your childhood, were there any early experience or teachings that laid down the foundation for your spiritual inclinations? How did those formative years shape up your perspective? Yes, it is very important that in children's lives we anchor certain spiritual, जो क्या कहते हैं हम, हमारे जो सनातन धर्म है, जो हमारी शिक्षा है, जो सनातन धर्म की है, वो हमारे पेरेंट्स से भी मिलते हैं, हमारे नाना नानी से भी मिलते हैं. तो मेरा बचपन, most of my childhood grew up very close to my nani's family, my mom's family. And we used to basically have in my nani's house, my nanaji was a very avid deity. He used to do a lot of deity worship. So unke ghar mein he would have the Lakshmi Narayan deities. And everything in the house centered around them, meaning there would be Satyanarayan Katha every month. There would be, my nani used to read Ramayana. She could read in Hindi. So वो हिंदी में पढ़ते थे और हम सुनते रहते थे. तो बचपन में हमें रामायण का पाठ बहुत मिला. We got to hear Ramayan from my grandmother a lot because she would read it. And दूसरी चीज थी, I don't know, maybe बहुत सारे बच्चों को, like who have grown up abroad, their parents are more strict कि आप just your Indian culture है वो भूलो मत, क्योंकि it's very easy when you're abroad. Absolutely. तो हमारे नाना जी थे, वो हमें हमेशा वो सागर की टेप रिकॉर्डर की रामायण होती थी, सागर्स रामायण, रामानंद सागर. So we used to basically, जब भी हमारी हॉलीडेज होती थी, हमें वो दिखाया जाता था, you see रामायण. तो रामायण का we used to be taught Ramayana a lot of focus on Lord Ram, Lord Vishnu. And then they always used to be some kind of inviting of brahmanas to eat prasad at our house. There used to be saints invited to our house. So we used to get a lot of exposure to that. And there was deity worship always in the house. Abhishek तो मेरी नानी हर रोज करती थी, और मेरी मम्मी भी वही concept follow कर रही थी. फिर जब हम छोटे थे, like I said, we used to come to the Hare Krishna temple, but we were not following strictly the principles. I used to go to Gita classes, which were held in the temple, we were taught Gita shloks, we were taught how to chant. And I vividly remember when I was a kid, maybe like very young, 6 or 7 or 8, somewhere around there. I was sitting on the same steps, क्योंकि हमारा मंदिर यहाँ है श्री राधे बाकी बिहारी, और जैसे बरसाना में पौड़ियाँ होती है ना, राधा राधी के धाम में, सेम यहाँ पे पौड़ियाँ, हमारे पौड़ियाँ हैं. We have stairs, just like very similar in Barsana, there's stairs.
So I used to sit at the bottom of the stairs, and from the bottom you can actually see Krishna, Radha, Sita, Ram, Lakshman, Hanuman. You can see all the deities. So I remember I would sit there and just chant, and I didn't know why I was chanting. I was a kid, I was probably told to do chanting, but I really vividly remember sitting there. So these were sort of the basic things our parents would do, which was हमें पता था कि deity worship, हमें पता था कि we have to read the Ramayana, we knew what the Gita was, we got exposure to Gita shlokas, we would come to the temple, and basically like all Indian children, their parents are the ones who anchor those things in you. Like that, my grandparents and my parents had a big hand in propagating that in our consciousness from a young age. Of course, we were not completely following, but Krishna had a wonderful arrangement for us to appreciate this movement of Krishna consciousness. So later, बाद में हमको हम गुरु से कृपा मिली और गुरु से शिक्षा मिली. Then we were able to adapt the whole lifestyle. ग्रेट. सो व्यूअर्स, ये चीज़ यहाँ पर लर्निंग की है कि जैसा कि हरिकांता जी की पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली थी और बिजनेस के लिए कीनिया गए हुए थे, और उन सब चीज़ों के बावजूद भी अपने इंडियन सनातन धर्म और कल्चर को उन्होंने नहीं छोड़ा, जो आपकी फाउंडेशन होती है. तो ये यहाँ पर सीखने को मिला. जबकि आपने वो सारा ग्लैमरस लाइफ भी देखी, वो जो है इंग्लिश कल्चर भी देखा, एजुकेशन यूएस में करी, तो उस तरफ इन्फ्लुएंस होना बहुत लाजमी था. लेकिन जो घर की माँ बापों की और पेरेंट्स की जो फाउंडेशन थी, उसने कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से जोड़े रखा. इसीलिए हम भी जब आज मैं यूरोप में हूँ, तो यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो हमारे कल्चर से जुड़े रहें और सारी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट करें. आप अपने मटेरियल लाइफ को भी चलाएं, वो भी ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आप अपने अगर इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है. तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ. वो क्वेश्चन यही इसी से रिलेटेड है कि जब आपने ये भक्ति मार्ग अपनाया, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द डिवोशन साइड, इसके बाद कुछ चेंजेस आपके लाइफ में हुए होंगे, क्योंकि जब आप पूरे तरह से मटेरियल लाइफ होते हैं और मटेरियल लाइफ से थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, और मैं जितना स्पिरिचुअलिटी समझता हूँ, स्पिरिचुअलिटी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्पिरिचुअलिटी ऑल अबाउट योर सेल्फ. अपने आप को जो है कुछ एक लॉज हैं जो दिए गए हैं, उसके थ्रू आप जीते हैं, दैट इज़ द स्पिरिचुअलिटी. तो आपको ये भक्ति मार्ग पर चलने के बाद, डिवोशन के मार्ग पर, कृष्णा कॉन्शियस के मार्ग पर चलने के बाद, हाउ द थिंग्स गॉट चेंज फॉर यू, प्रोस्पेक्टिव ऑफ लाइफ. You see, the thing is, we are spiritual beings. जब हम भक्ति everyday seriously लेने लग जाते हैं, जब हमें ऐसा रियलाइज करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम सच में आत्मा है, तो हमें जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा इंडियन कल्चर है, हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर है, उसकी अवेकनिंग होती है. तो हमें वही जिंदगी लगती है, और जो हम पहले कर रहे थे ना, वो बिल्कुल यूजलेस लगती है. तो मैनी थिंग्स चेंज्ड फॉर मी जब मैं सीरियस होने लगी, क्योंकि मेरी फैमिली सीरियस नहीं हो रही थी जब तक मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई. व्हेन माय ग्रैंडफादर passed away, the head of the family passed away, then everybody just shifted. They went from non Krishna conscious to completely Krishna conscious, very following very sincerely, everybody getting gurus, diksha from guru, everybody taking the path very quickly. And उस वक्त मैं अमेरिका में भी थी. I was still in America and I just finished my first year in college. I remember that day because my mother called and it was 6 a.m. in America, and she was crying on the phone, and मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों रो रही है. Like, I was sad, but I was not so sad that tears were coming out of my eyes. My grandfather is gone. And my grandfather always wanted me to get educated. He was very proud that I went to study in America and I was studying. So he supported my education in America. But for me, in the beginning, it was like everybody's just taken on this cult. कि एकदम से कुछ खराब हो गया, ये ऐसे कैसे पूरा उल्टा हो गया फैमिली. तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि
सब कुछ चेंज हो गया था, कोई मीट नहीं खा रहा था, नो अल्कोहल, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली. Hmm. And for me, I was just completely shocked. I thought my family's got crazy. Hmm. So I could not accept. I was just still discovering it. Then kya hua? I got association with many devotees in America. I sang kirtan in the Rath Yatra. So my association actually started with kirtan, doing seva. Hmm. तो जब मैं कीर्तन की सेवा करती थी, मुझे फिर बहुत अच्छा लगे. आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट बीइंग अराउंड द हरे कृष्णास. Hmm. सो उस सेवा से मेरा पूरा माइंड चेंज. Hmm. I think the most important thing that which transforms your consciousness is that service. When you Absolutely. find service, then you gain purpose. And when you gain a purpose in spirituality, then you realize this is your eternal swarup. This is your eternal constitutional position. This is your eternal responsibility. So मैं कीर्तन में बहुत फोकस करने लगी. जब मैं केन्या वापस आई, when I came to Kenya, I would go to funerals and I would go to birthday parties and go to home programs, everything, and I would sing kirtan. Okay. But of course, internally in my heart, I loved going to, not in a bad way, I would prefer going to funerals because my connection was going deeper. I was realizing that kirtan is not a performance. एक्चुअली क्या होता था, जब लोग मुझे आके कहते थे हरिकांता और हरिका, उस टाइम मेरा नाम हरिका था, कि यू सिंग सो नाइस, योर ब्यूटीफुल वॉइस, मुझे बहुत अजीब लगता था और मैं जाके चुप जाती थी क्योंकि आई वाज टायर्ड ऑफ गेटिंग ग्लोरीफाइड ऑल द टाइम. एंड it was something eternally I was battling. I was like, I don't come here to sing for people's pleasure. I'm trying to. It was something different because, Yeah. I mean, I had got everything material, but I was still not happy in America. So then I was wondering, there has to be something different in spiritual. I can't just be about my voice being so nice. So when we used to go to the funerals, I used to actually see कि लोग मेरे साथ गा रहे हैं. मतलब ये एक परफॉर्मेंस नहीं है जहाँ पे आप जाओ और एक सेलिब्रिटी आते हैं और गा रहे. नहीं, कीर्तन में क्या होता है कि आप दोनों एक साथ, you're relating to the pain of the person because it's श्रवणम कीर्तनम. आप गाते हो फिर सुनते हो, फिर वो गाते हैं फिर वो सुनते हैं. तो ऐसे ये परफॉर्मेंस नहीं है. It is the congregational chanting. You can't do bhakti alone. Yeah. So it was so wonderful that when I go to in funerals, people are more serious. They were actually attaching themselves not to me. They were attaching themselves to the holy name. And I could hear that when they were singing. So I really, I started getting attached to that. And it really started changing my consciousness because in mature consciousness, it's about being the greatest leader, or if I become a musician, मैं top में होना, ऐसे होना. But in bhakti में क्या आता है कि it's not about you. It's about you making others better than you. You are trying to do your best, but you're also making sure that जो भी आपके साथ है, whoever is with you does better than you, कि वो आपसे भी ज़्यादा better करे. तो ये transformation mind में आना, consciousness में आना, ये भक्ति से आया, ये कृष्ण consciousness से आया है. कि जब भी मैं अभी book distribution में, I go for book distribution, especially I love it in Vrindavan, is that sometimes I'm struggling myself. It's not that as a spiritual person you don't struggle. Struggle तो होती है. प्रभुपाद कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, कि हर कदम पे विपदम, मतलब at every step हाँ आपको problems आएंगी. तो आपका mindset, it's how you respond to those problems that will reduce the problems. और यही हमें गीता में सीखने को मिलता है. When we see Krishna and Arjun, Arjun is the greatest warrior. Yeah. He is the greatest personality, but even the greatest personality is conquered by Maya. Absolutely. So Krishna comes as Guru to transform his own consciousness. And in this way, slowly, by engaging in service, doing Harinam, doing book distribution, my whole consciousness changed from I want to work in a corporate field to I want to go and live in an ashram, and that even in London as a brahmachari. So from this whole materialistic life, my whole perspective just shifted and it went to like, I want to do something very renounced, which also my mom was not very at that time because मैं लड़की हूँ तो हमेशा लड़की के लिए you have to get her married quickly and all these things. Yeah. So in that time I wanted to go. My consciousness changed so much, and when I went to office one day, I was like, ये लोग बस यही करते रहेंगे, आप पैसा कमाओ और फिर वो स्पेंड कर देंगे. लाइक दिस इज जस्ट इट, इज दिस लाइफ कि मैं कितने लाइफ टाइम्स मैंने यही किया होगा.
इसलिए मैं ये वापस आ गई हूँ. And so then internally, I was also reflecting. I was seeing things. I was doing seva, and at that time also I was getting many marriage proposals, but nothing was fitting for me. Nothing was working out for me. So then Krishna was opening this door where I can actually go and get spiritual education and get Guru's mercy. So then that transformation in the consciousness came, where it was not just material, but now I have got material education, I've got material experiences, but now I'm going to go for a spiritual education. I'm going to go for a spiritual experience, and I'm going to have some sacred time where it is just me and studying the shastras and studying the scriptures and trying to understand what is the actual goal in life. So that's how I ended up in the Brahmacharani ashram in London, in the manor, in ISKCON, London, and then I did seva there. And as you do seva, I think seva has a big connection when you do, basically, I always used to feel I'm overqualified person in the ashram because someone who's come from Stanford, very opulent school, that is very, you're living in America, in California, it's a very opulent place, and London is also opulent, but then you shift your life and you go to an ashram. So here I was doing like sweeping the floors, cleaning, and I was having the best time of my life. मैं सिंपल से ही काम कर रही थी, मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं पोछा कर रही थी, मैं आश्रम के जैसे मेरा घर होता है, मैं आश्रम को अपना घर मानने लगी, और उसमें जैसे एक महल होता है, आप महल की सफाई करते हो, वैसे मैं करने लगी. तो जस्ट सिंपल थिंग्स थे, जस्ट क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग डिशेस, just simple things, spending time with the cows, I was like, for me, the best thing in the world. Like, I feel in my life that time I spent in the ashram was the most beautiful time. And I'm very grateful that I got opportunity to go there, because it completely changed my conscience. That was more than the American dream. That is the real essence of life, I felt. Doing simple tasks, ऐसे simple चीजें, और simple living and higher thinking. कि आप उस time you do have desires to have things, but slowly, consciously in your mind, you're trying to live with lesser things. You're trying to reduce. You have it's awakening in your heart कि मुझे 5 साड़ियों की जरूरत नहीं है, मैं 3 पे ही चलूंगी. 3 पे ही काम हो सकता है. हाँ, exactly. So ऐसे consciousness थोड़ा change होता रहता है, but main ingredient होता है ना, जब आप अपने mind और हृदय और you put your heart into seva, फिर वो transformation हो जाता है. Then you see. Absolutely. Yeah. So that's what I can say. वही yes. तो वही उसका क्रैक्स है एक्चुअली. तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और आपके मैंने वीडियोज देखे हैं सिंगिंग के, और वाकई में आपकी वॉइस बहुत अच्छी है. बहुत अच्छे आप भजन जो है करते हैं, गाते हैं, और बहुत बढ़िया है वो. तो आप उसको कंटिन्यू करें, यही मेरी एडवाइस है. और कृष्णा कॉन्शियस में जो कीर्तन है उसका कितना महत्व है. और वैसे भी जब हम भजन सुनते हैं, हमारे घर में भी मेरे वाइफ भी जो है जैसे भजन लगाती है, तो कृष्णा के वगैरह, उससे जो आपको माइंड की जो सूदिंग है, जो मतलब थकान है, वो एकदम आपकी जो है ख़त्म हो जाती है. तो ये कुछ ना कुछ तो इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है. जो आप कहीं आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, बट आप एक ढंग का अच्छी आवाज़ में एक भजन सुन लेते हैं तो आप पूरा रिलैक्स हो जाते हैं, थकान आपकी पूरी चली जाती है. तो थोड़ा सा इसी से आगे बढ़ाता हूँ. ये जो मटेरियल लाइफ है इंसान की, वो आपको कहीं ना कहीं उससे जुड़ा रहना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरतें हैं आपके जीवन के लिए. और इवन अगर मैं स्पिरिचुअलिटी या कोई सेवा में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो मुझे फाइनेंस की नीड है, राइट. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मटेरियल लाइफ है, यहाँ से भक्ति मार्ग की तरफ आना कितना आसान है, टफ है या इजी है, और या जो है इसके लिए कुछ एफर्ट्स करनी है. तो थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने वो सारी लाइफ देखी है. यू हैव सीन द बेस्ट मटेरियल लाइफ. यू बीन इन US, you spent some time, you was marketing managers or whatever role you are in, but you did that, so you know that glamorous, that material things, how important it is for a human being. तो अभी ये कितना टफ है.
how difficult it is. And आपका सजेशन क्या है? Along with your material life you can do this, or how to make a balance between? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है, इट इज सिंपल फॉर द सिंपल। ये बहुत आसान मार्ग है, बट ऐसे हमारा जो माइंड है, आवर माइंड, गीता में भी लिखा है कि आवर माइंड कैन बी आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड और आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि yes, pursue your career, pursue your education. Even a lot of young girls come and ask me, should we leave? No, do not leave your education. It's a rite of passage, and it's good to have that education because you can utilize that service to propagate your spiritual consciousness as Absolutely. well. But that doesn't mean that you stopped earning money, you stopped working, but you realize that whatever service, whatever ड्यूटी, धर्म, जो हमारा धर्म है, कोई लोगों का नेचर ही है कि वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रह सकते हैं पूरी जिंदगी। सम पीपल्स नेचर, इट इज इन देयर नेचर दैट दे कैन इजीली बिकम ब्रह्मचारी एंड इजीली ब्रह्मचारी, दे कैन क्विकली अडेप्ट बिकॉज उनका नेचर है। कोई लोगों का नेचर है कि उनको दो फ्लेवर्स चाहिए, थोड़ा सा भक्ति चाहिए, थोड़ा सा मटेरियल लाइफ चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इन द एंड ऑफ द डे what you have to do is you have to draw a circle and say Krishna is in the center of everything. तो आप जो भी कुछ करते हो, जैसे आप पैसा कमा के आते हो, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि कैसे हमारे जो धन संपत्ति घर में आती है, how we should allocate it. 50% goes to this, 25% goes to this, and 25% goes to that. So at least certain amount of our income, when we give in the service of the Lord, we are already becoming God conscious. We are already becoming spiritualized because that income is also getting purified. Our heart is also getting purified, and we're not leaving our sustenance. You need to sustain yourself. We live in a world. You need things. जैसे साड़ी पहननी होती है, टिकट्स चाहिए होते हैं वृंदावन धाम जाने के, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहते बस हम, that is also not proper renunciation कि आप अपने responsibility से भागो, नहीं। You realize what is your nature and then you nurture it. You understand, okay, I want to be a doctor, you're a physician, so you see how you can benefit not only the material world but the spiritual world. So you have to, yes, so you can create certain boundaries. For example, many people who go to work, they have a certain amount in the morning. If they wake up, they can dedicate to morning meditation. कि आप अपने लिए एक स्पेस बनाइए सुबह में जहां आप ये सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए, ठीक है। फिर like that you are delegating certain hours in your life to awaken your spiritual journey, to awaken your spiritual consciousness, because we have to really realize the importance of this truth that we are not this body, we are the soul. हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम कभी भी जा सकते हैं। One thing is for sure, death, कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो होनी है। तो हम ये बैठ के नहीं कह सकते ओके हम बस मटेरियल चीज करेंगे, हम मुझे पैसा कमाना है। नो, you have to prioritize your spiritual journey as well. True. And if you make baby steps, small things like waking up early, chanting 1 or 2 rounds, eating consciously. आजकल कितने vegan restaurants, I think also in Norway, in London, we had lots of vegans conscious are food. Getting more and more actually. That exactly. So being aware that what you're putting, your body is a temple, being aware of what you eat. जो भक्ति है वो बहुत आसान है, हमको बताया गया होता है by our mentors that it is as simple as ABCD. These are the basic things you have to do. A stands for association. कि आप एक चीज अपने लाइफ में रखो, you become what your association है। अगर आपके दोस्त ड्रग्स करते, you will become a drug addict. but अगर आपके दोस्त भजन कीर्तन करते, वो आपको अच्छे संगा में लाएंगे। तो आप अपने पास एक एसोसिएशन क्रिएट करो। जहाँ if you're living in Norway, if you're living in London, if you're living in Australia, find a ISKCON center, find a temple where you can get that good association. Then slowly साधु संग करते करते आप खुद ही साधु बन जाओगे। Even if you're wearing suit, pant, tie, Krishna does not see what is the external. Krishna is
भावग्रही जनार्दन, कि आपका भाव देख गया कि भाव है। आपका कितना, हाँ, कितना इंटेंशन है कि आपकी भगवान की सेवा करो। वो एब्सोल्युटली। आपका इंटरनल जो कनेक्शन है, इट इज मच मोर ग्रेटर देन द आउटसाइड। बट जो एब्सोल्युटली। इनसाइड वी आर ट्राइंग टू क्लीन, चेतो दर्पण मार्जनम, वी आर ट्राइंग टू क्लीन आवर हार्ट्स, हम अपने हृदय को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू साधु संग। तो नंबर वन इज एसोसिएशन, बी इज रीडिंग बुक्स। बुक्स तो हम रीड करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमको बोले ये किताब पढ़ो, ये किताब, ये किताब, but those books will not teach you about your eternal purpose. Nobody teaches you in school how to prepare yourself for death. Nobody in school teaches us how to prepare for old age. ये चीजें एब्सोल्युटली। हमें सिखाई नहीं जाती है। बट जो करेक्ट। हमारे वैदिक शास्त्र है उसमें ये लिखा है, वर्णाश्रम लिखा है, वो करेक्ट। सिखाते हैं कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज के लिए, ताकि हमें उस मार्ग पे हम स्लोली जा सके। तो रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स is very important to read this book so they can associate with books. You can still go to work and read books. Especially, I remember I started my Krishna conscious journey by reading Prabhupada's King of Knowledge, which is one of the small books, but that really attracted me, and then I got into Bhagavad Gita. So King of Knowledge for me was very important. So you can read the small books as well. And then C is chanting. ये जो भगवान का नाम है, हम कीर्तन सुनेंगे, वी गो फॉर मेनी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, रॉक कॉन्सर्ट्स, वी कैन गो टू अ कीर्तन मेला, वी कैन गो टू अ कीर्तन रिट्रीट, वी कैन गो एंड सी व्हाट इट इज। बहुत सारे स्पिरिचुअल और योगा रिट्रीट्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू फाइंड अ इस्कॉन सेंटर wherever you're located. And then E is, which I found for me is very profound, from the Queen of England, or the King of England हो गया, to the sweeper on the street, everybody finds purpose from some kind of सेवा। तो अगर आपको सेवा करनी है, आप भगवान की सेवा करिए। इसका मतलब नहीं है आपको कोई बड़ी सेवा करनी है, आप एक छोटी सी सेवा, झाड़ू ले लो और झाड़ू करो, जिसको वाइप द विंडोज ऑफ द टेम्पल। आपको कोई भी आपको गैप दिखे कि कहाँ पे मैं जाके फिल, आप एक हम्बल सर्वेंट, जस्ट लाइक अ हम्बल सर्वेंट, यू गो एंड डू दैट सेवा, जस्ट स्टार्ट सेवा करो। And then once you engage yourself in these concepts, A, B, C, D, sorry, D is diet. I went to E, I forgot D. D is diet. That is also important. Because important, yeah. Very Because that important. changes your consciousness, and it's Absolutely. nice to be, it's nice. एक आप एक फैशन जैसे मान लो, बहुत सारे उल्ट पटांग के फैशन होते हैं, बट हम एक फैशन जैसे मान ले कि हम ये खाना खाएंगे, हम जब बाहर जाएंगे, we'll be picky about our choices. So this new fashion, veganism, is also a kind of fashion. So in Krishna consciousness, we don't eat meat, no eggs, no fish, no Correct. onion, no garlic. And if you cook at home, the advantage of cooking at home is that you can offer this to Krishna, और आप जो खाते हैं वो भगवान का झूठा हो जाता है, और उससे आपको बहुत सारी कृपा मिलती है, Correct. and lots of blessing. So if slowly you can just incorporate these things. आप Small जब small. खाना बनाओ, हाँ, आप भगवान को भोग लगाओ। वो तो हमारे इंडियन कल्चर में बचपन वैसे से ही ही है, है। कोई भी डर, वैसे ही है। हाँ वैसे ही है। प्रसाद तो हम खाते ही हैं, कोई भी खाते ही मंदिर है। जाओ आपको प्रसाद तो मिलता है, मिलता ही तो है। भोग लगाना, हाँ। Offering food is good. Cooking food for Krishna is the beginning. You start these small things, small things करने लगो। Reading Prabhupada's books, कीर्तन सुनना, तो ऐसे ऐसे slowly our consciousness can change to realize that we are not escaping from our duty, we are not escaping from, that is not real bhakti is not के ओ मैं भाग अपने दुनिया से भाग के रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं से। आश्रम में, हाँ हाँ। मैं आश्रम में नहीं, that is wrong vairagya, That is wrong. that is wrong, because we say International Society of Krishna Consciousness, meaning कि हमें we have to be conscious before being Krishna conscious, कि हमें we have to be conscious कि हमारा कैरेक्टर कैसे बदल रहा है, हमारा जो हृदय है वो साफ हो रहा है या नहीं। Correct. तो slowly when you do service, you will realize कि आप ज्यादा टॉलरेंट हो पा रहे हो, आप ज्यादा हम्बली बिहेव कर रहे हो, आप ज्यादा कंपैशनेट हो रहे हो, जीव दया, आपको दया ज्यादा आती है। बट हाउ यू एड्रेस दैट दया चेंजेस। आपको रियलाइज होता है कि हर बंदा हमेशा के लिए नहीं जिएगा, बट अगर वो उन्हें एक नाम कृष्ण का ले लिया, तो वो एक नाम से वो सुधर गई उसकी पूरी जिंदगी। और कृष्ण कभी भूलते नहीं है, Correct. तो आप जो भी छोटी उनके लिए सेवा करोगे,
Krishna never forgets. Krishna will always remember and he will pull you. And bhakti, Srila Prabhupada says, bhakti is such an amazing thing. कि जैसे लाइफ में आप रेस्ट करो कि आप पैसा सेव करो एक बैंक पे, फिर कुछ bankruptcy हो गया, you lose all the money or something goes. But in bhakti, it's not like that. In bhakti, it's like that bank where whatever you have put in the savings or whatever FD you have made, Krishna will never forget. और इस जन्म में शायद you don't finish it. Next जन्म में you will start from that same place. So in bhakti, there is never any loss, Srila Prabhupada says. There is always gain. There is always gain. There's always spiritual gain. So yes, become doctor, become lawyer, become scientist, but utilize a little percentage of your service to the world to also spiritualize people, to make them conscious that they have limited time and that time has to be given to a greater purpose, to service of the Lord. So ऐसे करके you can try. I hope that's helpful. या एब्सोल्युटली। और यही मैं बोलना चाह रहा था कि कई जगह ऐसा समझ में आता है कि लोगों को जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं ना, दे गेट इनटू अ कि भाई कोई बड़ी रिचुअल्स फॉलो करनी है, कोई हमें कुछ ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, तो पीपल हैव द लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। और इसीलिए ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये मैंने महसूस भी करी हैं। आप अपनी लाइफ में ये छोटी ही चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप इनको आप अपनाना शुरू करते हैं तो यू विल गेट इनटू दैट पाथ ऑलरेडी। यू नीड नॉट टू डू एनी बिग थिंग्स। तो ये बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बताया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप जो है आपने ये भक्ति मार्ग पर गए और आपने तिलक लगाना शुरू करा और आपने चैंटिंग करी होगी, जो भी चीज़ें थी, तो आप एक सोसाइटी में रही हैं जहां आपने जो है यूएस में पढ़ाई करा, जहां आपने जो है जॉब करी, तो जो लोगों का नज़रिया है देखने का वो कैसा हो जाता है? हाउ द पीपल आर। फैमिली से मुझे समझ आ गया कि यूर फैमिली, होल फैमिली इज़ द डिवोटी फैमिली। तो फैमिली से तो आपको सपोर्ट मिला जब उन्होंने ही आपको जो है एक हिसाब से फाउंडेशन दी, उन्होंने ही आपको इसके लिए मोटिवेट करा, मैं ये कहूँगा। तो लेकिन जो बाकी जो आपके दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हैं, या आपने जितना टाइम जॉब करा, तो उन लोगों का नजरिया कैसा रहता है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो आपका असली में दोस्त होता है ना, वो आपको भक्ति के मार्ग में ले आएगा। जो आपका असली दोस्त है वो आपको कृष्ण के भक्ति में आएगा। क्योंकि जब हम गीता पढ़ते हैं, गीता में हमको क्या ज्ञान मिलता है कि अर्जुन भटक रहा था, मगर उनका असली दोस्त कौन था? कृष्ण। कृष्ण brought Arjun out of that confusion. Krishna gave Arjun the gyan which sat in his heart, and from that he realized कि ये मेरे भाई नहीं है, मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। इस जन्म में ये मेरे भाई हैं, but you have to come to the realization that you are not this body, you're the soul. तो जब मैं अपनी कृष्ण कॉन्शियस जर्नी बिलीव स्टार्ट कर रही थी, उस टाइम तो बहुत it was very shocking for me. So I was mostly, I thought my family has got into a cult ke koi, society mein ghus ke. It was shocking for me. But then what now has happened is that all those friends I had, all those social groups I had, I cannot relate to them. And yes, I do say hello to them, but I just can't associate to them because they not my real friends are those who will take me higher in my bhakti, not bring me down. So आपका पूरा vision of life change हो जाता है, आपका पूरा goal structure change हो जाता है, और कृष्ण आपके ऐसे desires भी purify करते रहते हैं। जब आप धाम में जाते हो, आपको ordinary जगह नहीं जाते हो। वृंदावन जब लोग जाते हो कि कहते हैं कि बहुत सारा like they see a lot of dirt, trash and all this, but that's because you don't have the vision to hear Vrindavan. Absolutely. तो जब आप हरि कथा सुनते हो, आप जब हरि कीर्तन सुनते हो, आपका हृदय उसमें परिवर्तन आता है। Your heart is changing, your heart is getting cleansed. So if your heart is getting cleansed, then of course your vision of life changes. You don't have those same desires. Oh, I have to talk, I have to do this in the material world. You don't care. Your real focus is, okay, I'm going to go to office from 9 to 5 because I need that Lakshmi so that I can prepare for my trip to go to Vrindavan. So even while you're in the office,
you're looking for ways to think about Krishna. Absolutely. Always think about Krishna. तो गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमम नमस्करु। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पूरा जो भागवत गीता का पाठ लिखा है, this one shloka contains everything, the essence, which is always think of me, become my devotee, offer your obeisances, and I promise you will come to me because you are my dear most friend. तो जो हमें realize, it doesn't matter if people don't appreciate us, it doesn't matter if people don't remain faithful to us because we've become Krishna conscious, because we realize our real relationship is with Krishna, and our real relationship is with Krishna's devotees, and our real family is our Guru's family. So आपका पूरा vision of life changes, and people, whether they accept you or don't accept you, that's not your problem. Your problem is, are they doing better in their spiritual life? Are they getting some kind of Krishna consciousness? Are they trying to accept some? So you become a little more tolerant to, और like पहले क्या होता था कि अब छोटे होते तो आपको peer pressure बहुत होता है जब as teenagers. So you want to do those activities, but when you get knowledge of Shastra, when you get knowledge of our ancient scriptures, you become tolerant. You really realize what is your goal in life, who are you, who is your friend, and what is your relationship with God. So you don't have space in your mind to see all these hatred or society not accepting. You have space in your mind now. How do I grow my relationship with Krishna? How do I create space for Krishna bhakti, Krishna service in my heart? आपका पूरा दिन ही ऐसे जाता है, क्योंकि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसे नहीं कि हम आइडल बैठे होते हैं, बहुत सारी सेवा है, बहुत सारी। करेक्ट। आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको अपना लिसनिंग करना पड़ता है, आपको अपनी 16 राउंड स्टैंड करने पड़ते हैं, तो आपको पूरा ही लाइफस्टाइल चेंज करता है। इट जस्ट चेंजेस। एंड व्हाट आई वुड से इज, if people are not positively reciprocating with you, then you should realize that there is a better place to be. Maybe you need to be with the Hare Krishna, maybe you need to be in the temple, because if you need to be in an environment that will nurture you. So for me, I feel like it's not like I don't have difficulties in Krishna consciousness, but my relationship with the ultimate truth with Krishna is more important than all the negativities in the world. To understand के हर बंदा सफर कर रहा है। अगर हम ये रियलाइज कर जाते हैं कि भाई जो बिलियनर है वो सफर कर रहा है, और जो सबसे भी छोटा है वो सफर करना ही है। बट जो गरीब इंसान है, अगर उसके नाम में उसके जीप में हरि नाम है, तो वो थोड़ा कम सफर कर रहा है, क्योंकि उसके पास कृष्ण है। और जितना चाहे अब पैसा है, you cannot buy bhakti with money. Absolutely. So it is not something that is like bought with money. It is something that is earned with cultivation of your character, the Guru's mercy, the mercy of the acharyas, the mercy of the devotees of Krishna. When your vision of life changes, then it doesn't matter who accepts, who doesn't accept. You only one problem कि कृष्ण मुझे please accept कर ले, कि गुरु मुझे accept कर ले, कि वैष्णव से मेरी कभी अपराध ना हो। तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका गोल कृष्ण है। तो जो है, आप वृंदावन कितना फ्रिक्वेंटली जाती हैं? तो हम कोशिश करते हैं, हमारा जो रेकमेंडेड है वैष्णव, इसका एक साल में एक बार तो जाना पड़ता है। और क्योंकि जब हम वृंदावन जाते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि हम असली में हमारा रियल घर वृंदावन है। वी आर रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन। वहाँ पर जो एनर्जी है वहाँ की ना, वो बहुत। मैं तो अभी रिसेंट होके आया, अभी मैं इंडिया से आ रहा हूँ, 19th को वापस आया। हाँ जी। तो रिसेंटली ही मैं यहाँ से वापस होके आया हूँ। तो मतलब आप ये देखो कि जो वहाँ पे पिछले सैटरडे ही मैं वापस आया हूँ। तो वृंदावन में मैं गया, और कई जगह मैं गया तो 2-3 बार हूँ। एक बार पेरेंट्स को भी लेकर गया, फैमिली भी गई है मेरी। मैं इस बार गया थोड़ा सा टाइम लेकर के। टाइम तो फिर भी नहीं था, बट इतना था कि मैं वो जगह भी जाऊँगा जहाँ
जहाँ जो है अनएक्सप्लोर्ड है। अगर आप देखो ब्रिज का पूरा 84 कोस बोलते हैं ना, तो वो सारी जगह जाने के लिए आपको चाहिए टाइम। जैसे हाँ जी। हाँ, तो अब इस बार मैं गया राधा रानी का जो मायका है, जहाँ जो उसके जो दादा दादी थे और वो जो थे, उस वाले टेम्पल में भी मैं गया। और ऐसे वेरी ही नाइस। टेर का जो वो है, जहाँ भगवान ने टेर लगाते थे, वहाँ से गोकुल से पास में है ना टेर का मंदिर, जहाँ पर हाँ वो जी। गाय चराते हुए करते, तो बड़ा मतलब वहाँ जा करके आपको एक नई फीलिंग होगी। और अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो आपको लगेगा कि भगवान ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब कितनी रियलिस्टिक है। वहाँ का हर हाँ चीज़, जी। वहाँ के जो जो पेड़ हैं, जो वहाँ की वहाँ का जो वो कुंज वाला जो फीलिंग होती है ना, जो बबूल के जो पेड़ होते हैं कांटेदार, वो आपको हाँ जी। इंडिया में बहुत कम मिलेंगे, अनलेस एंटिल थोड़ा बहुत राजस्थान में। बट आप ब्रिज में देखो बड़े कॉमन, जब आप वो वहाँ जाते हो गोकुल की तरफ या जो है मथुरा की तरफ, तो आपको वो मिलेंगी। तो हाँ वो जी। वो है फीलिंग है, दैट इज रियली। और मैं तो और अभी टाइम लेके जब जाऊंगा तो अगली बार, कुछ हमारा जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी होती हैं, ग्लोबल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। लेकिन बट मेरा मेरा वाइफ का भी हमारा मानना यह है कि जब जाओ तो थोड़ा तसल्ली से, जैसे अपना 10-15 दिन। तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, हाउ मेनी तो डेज? जैसे जैसे जब हम जाते हैं वी ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ द रेकमेंडेड इज कि आप, अगर आपका इनकम अच्छा आ रहा है और हाँ, कृष्ण ने आपका फाइनेंशियली आपको अच्छी तरह अरेंज किया है, तो आई वुड रेकमेंड कि 6 महीने आप प्रीचिंग करो बाहर। जैसे हाँ। मैं केन्या में प्रीचिंग कर रही हूँ, हम्म, तो माय मेन फोकस इन केन्या इज दैट आई एम, व्हेन आई एम अवे फ्रॉम वृंदावन आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वृंदावन। क्योंकि जो भी मेरी भाभी भी कहती है कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं उसे हमेशा कहती हूँ मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो थोड़ा सा वो चीज के लिए अहमियत, मतलब देर इज मोर वैल्यू इन सेपरेशन। समथिंग माइट नॉट बी नियर टू यू बट इज वेरी डियर टू यू। हाँ, सो वृंदावन के लिए वो भाव, वो मूड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम वृंदावन में जाते हैं बट वी डोंट अप्रिशिएट। तो शिला प्रभुपाद रेकमेंड्स कि व्हेन यू आर गोइंग टू वृंदावन, व्हेन यू आर गोइंग टू अ धाम, कोई भी धाम में जाते हैं, देयर आर 3 रीजंस यू शुड गो टू अ धाम। नंबर 1 इज फॉर इंस्पिरेशन। कभी हमें इंस्पिरेशन, उत्साह, लाइक यू नीड समथिंग टू फील स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड, यू गो टू धाम। And then you do Vrindavan Parikrama, you go to all the different tirths, and then you get inspired to do more seva. देन नंबर 2 इज फॉर सर्विस, कि आपकी, जैसे मैं जब मैं वृंदावन जाती हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरि नाम संकीर्तन, कीर्तन गाना का और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत करती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस धाम में, यू जस्ट डोंट टेक इट एज अ हॉलीडे, मंडेन हॉलीडे, कि आप शॉपिंग कर रहे हो, आप गोलगप्पे खा करो, बट ये एसेंस नहीं है। वो आप दिल्ली में भी कर सकते हो, वो आप हिमाचल प्रदेश में भी कर सकते हो, बट जब आप वृंदावन धाम जा रहे हो, आपको उस पे रियलाइज यू आर गोइंग टू धाम, यू आर गोइंग not to any ordinary place. You are going to a very extraordinary place where Krishna performed his pastime. So when you realize this, फिर आपको time की value पता है, और आपको realize होता है कि you do some seva. And third, which I don't know many people know, but it is very important, people go to die in Vrindavan. तो इस बार जब मैं वृंदावन गई थी, my spiritual master, His Holiness Kadamakanana Swami, was preparing to depart from this world. oh, So we went there to associate with him. So also I got a lot of association of Guru Maharaj, and for me as a disciple, that was the last memories. So in Vrindavan, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, इंस्पिरेशन, सर्विस, और आपका शरीर छोड़ना, डेथ। तो ये 3 चीजों के लिए हम धाम जाते हैं। तो वृंदावन, हमें रियलाइज करना पड़ता है कि वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ये जो धाम है, ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। ऐसे लगेगा शहर है, रिक्शा चल रही है, कचरा है, बट ये असली में हमें वो दृष्टि नहीं है अभी तक। absolutely. क्योंकि भगवान को देखने के लिए आपको आंखों की जरूरत नहीं है, आप बस सुनना पड़ता है। टू सी गॉड यू फील डोंट करना नीड आईज। है, यस, absolutely. यू हियर फ्रॉम योर हार्ट, देन यू कैन हियर। आपके हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, योर हार्ट चेंजेस, योर होल Absolutely. कॉन्शियसनेस चेंजेस। True, true. So these are the main reasons we go to Dham. हाँ, And every time I go to Dham, I focus on trying as much as possible
to purify myself. अगर मैं चाहती हूँ मैं बहुत सारा वृंदावन परिक्रमा, और जब भी आप परिक्रमा करते हो आपको बहुत जरूरी होता है कि आप वो नॉलेज, बहुत इस्कॉन में बुक्स मिलती है जो पूरा वृंदावन परिक्रमा के मंदिरों की नॉलेज देता है। तो Absolutely. आपको पढ़ना चाहिए कि कौन से मंदिरें हैं उस मार्ग में, आपको उन सब मंदिरों का दर्शन करना चाहिए, और जितना चाहे कृपा है यमुना महारानी से मदन मोहन में, आपको उन सब चीजों के लिए यू शुड गेट द नॉलेज, obtain a knowledge about the various temples, and as much as you can try, as much as you can, to do some kind of seva when you're in Dham. It is Correct. not a holiday place, it is a Absolutely. place of service. So Absolutely. whenever you go, you help the Vrajvasis, or you do a prasadam distribution, or you do some kind of book distribution, or kirtan, or something small, you know. That is the mood that we pray, we develop एब्सोल्युटली। when we तो go वहाँ पे there. है ये चीज़ें, मैं भी कई बार फील किया है, और मैं तो कोशिश रहती है, हमने पिछले साल जो है वृंदावन से ही एक सुमेधानंद महाराज जी हैं जो श्रीमद् भागवती कथा करते हैं, उनका आश्रम है वहाँ, उन्होंने बुलाया था, मगर वो इस बार नहीं मिले क्योंकि वो चेन्नई गए हुए थे। लेकिन वो आए थे रानीखेत में, तो हमने श्रीमद् भागवतम की कथा कराई थी जो 8 दिन की होती है ना, 7 दिन होती है, 8वें दिन। तो वो एक फीलिंग ही अलग है। पूरी टीम वृंदावन की आई थी, तो मेरा बड़ा जुड़ाव है वृंदावन के साथ, तो इस बार मैं थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करके आया वहाँ पे। तो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। आप हाउ यू डिफाइन द स्पिरिचुअलिटी फॉर ए कॉमन मैन? अगर थोड़ा सा एक कॉमन आदमी को बताएं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सुनते ही लोगों का ना ध्यान थोड़ा सा अपना दूसरी तरफ चला जाता है, मतलब वो सोचते हैं कि आपको रिलीजियस हो जाना है, रिलीजन से उसका कोई रिलेशन है। तो थोड़ा सा एक कॉमन आदमी स्पिरिचुअल हो सकता है विदाउट डूइंग एनी रिचुअल्स इवन इफ, तो उसके बारे में हाउ डू यू डिफाइन द स्पिरिचुअलिटी फॉर ए कॉमन मैन? So spirituality for a common man is not something separate. It is what we are basically, जो योग है उसका मतलब क्या है, भक्ति योग का मतलब क्या है? योग means to connect. हमारी जिंदगी में a common man is trying to connect to different things, and he's trying to connect to those things to get happiness. कि हम इतने सारी चीजों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें खुशी मिल सके। बट क्या होता है, हम जो अपना कनेक्शन है वो गलत चीजों के साथ जोड़ रहे हैं। तो भक्ति क्या करती है, हमें भक्ति एक अच्छी चीज से जोड़ती है जहाँ पे हमें हमेशा सच्चिदानंद कहते हैं ना, इटर्नल ब्लिस एंड हैप्पीनेस मिलेगा। सच्चिदानंद। सो इन दिस मटीरियल, या सच्चित आनंद मतलब जो आनंद आपको इस सृष्टि में नहीं मिलेगा। आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मुझे बाहर जाके आइसक्रीम खानी है, ठीक है आप खा लो, बट वो आइसक्रीम खाओगे वो खत्म हो जाएगी, फिर आपको मन करेगा कि आप दूसरी खाओ, फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। तो ये मटेरियल इज लाइक दैट, द आइसक्रीम इवेंचुअली मेल्ट्स और इट इज फिनिश्ड, बट यू स्टिल हैव डिजायर फॉर दैट हैप्पीनेस। So we are trying to connect to so many things to make us happy, but we are failing to understand that we are spiritual beings on a human journey. तो जब हमें रियलाइज होता है कि हम आत्मा है और हमारा मिलन एक सुप्रीम आत्मा से है, हमें उस चीजों से ज्यादा खुशी मिलेगी जब हम उनसे कनेक्ट करें। तो फॉर अ कॉमन मैन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज that life is very simple. It's so simple. It's so simple that you might just miss it. कि इतना क्या कहते हैं, सरलता मतलब it's so simple. पर हम जो वो सिंपल चीज है हम उसको ही भूल जाते हैं, हमें एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करें, क्योंकि किसी को वेस्टर्न बनने का भूत है, किसी को बॉलीवुड का भूत है, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं हम। So a common man, what is a common man? A common man, if you completely go back to Sanatan Dharma, एक common man धोती कुर्ता पहनता है, सुबह जल्द, ये हमारा इंडियन कल्चर है, वेस्टर्न। Before the British came in and changed the whole concept of a common man, what is a common man? He was a farmer. वो फार्म पे रहते थे, वो गाय, उनके घर में गाय होती थी, खाना हमें ग्रोसरी स्टोर में नहीं, we didn't have to go to supermarket to buy. Absolutely. हम अपने खेत में उगाते थे, हमको पता था कैसे इन चीजों को उगाना है। This is the real common man. He used to connect to the earth and he used to connect to the soul.
He used to do, आप कोई भी इंडियन घर में चले जाओ, वहां पे जोत दिया, इंसेंस स्टिक और एक बेल तो होती है. तो भजन कीर्तन हमारे खून में है. As Indians, it is naturally you're brought up being God conscious. And for Absolutely. Westerners, it's a little different. It's a little alien concept. Yeah. But common man in India was dhoti kurta and have a farm and live, in a beautiful farm where you're doing cows service, your farmer's lifestyle. So we were trying to connect to earth. So spirituality is not so alien. It is not a Absolutely. foreign concept. It is who we are. We are trying to connect to something. We are connecting. We're trying to connect. We are creatures of connection. We're trying to look to union for everything. Yeah. But the problem is we are connecting to the wrong things, which will eventually give us more frustration. So why don't we connect to something so wonderful, Satchit Anand, something that is full truth, full eternal happiness, eternal bliss. Krishna, we connect to him, we chant his name, we sing his glories, and then we will really understand that life is so simple. We just complicate it with all these new ideologies and all these new things, but it's very simple, simple for the simple. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. So, before my rapid fire round, I would like to ask the last question to you on this. Bhagavad Gita, I know that you have read it already. So, Bhagavad Gita ke ऐसे any two learnings which transform your life, or either I would say practically benefited to you in your life. Yes, number one is Tad Vidhi Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadekshanti Te Jnanam Jnaninas Tattvadarshana. This shloka, it comes in the Gita, and basically it says, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Try to render service to him, and he shall reveal the truth to you. तो ये जो श्लोका है, मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, क्योंकि in our spiritual journey we need a teacher, and that teacher becomes a mentor, and that teacher becomes a father, and that teacher becomes a friend. तो कृष्ण को गीता में क्या हो रहा है? What is happening? Krishna is basically Arjun's guru. So when Arjun sees the universal form and Arjun realizes that Krishna is the ultimate truth, then he surrenders to him and he says, Karpanya, before that, he says that now I surrender unto you. Please tell me what is right for me. Arjun tells to Krishna, and then Krishna shows him the mark. So for me, that verse is very important, because in our life, when you don't know what to do, you need a father, a spiritual father, you need a guru, you need a teacher who will actually cultivate the best out of you. He will give you a mission and he will tell you what is the actual purpose of your life. Yes, you're doing everything materially, but you need to have a spiritual mentor. And I would advise that to everyone, to find spiritual mentors, find some spiritual teachers who will guide you in a spiritual purpose. So for me, that verse is very heart touching. एंड ऑफ कोर्स आई हैव, मेरे तीन फेवरेट है, बट मैं आपको बता ही देती हूँ जो तीन है. तीनों ही बता दो और आप. हाँ, जो दूसरा है वो है मन मना भव मद भक्तो मध्य जी मम नमस्कुरु. ये जो श्लोक है, ये 2 बार कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गीता से. और उसमें क्या कहते हैं कि कृष्ण सेज ऑलवेज थिंक ऑफ मी. तो ये मैं हमेशा याद करती हूँ कि इट्स नॉट इजी टू ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, बिकॉज वी आर स्टिल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. Absolutely. हमारा माइंड इतने डिजायर्स होते हैं, हाँ. कुछ भी कोई रॉन्ग चीज हो जाती है, इमीडिएटली वी आर बिट Yeah. डिस्टर्ब. टू Correct. ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा. बट मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ, इफ आई ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल ऑलवेज थिंक ऑफ मी, एंड कृष्णा नेवर फॉरगेट. सो आप जो भी छोटी सी सेवा करोगे, कृष्णा आपको पुल करेगा, चाहे आप माया कितना आपको पकड़ ले. कृष्णा विल नेवर फॉरगेट. कृष्णा नेवर फॉरगेट्स. हम भूल जाते हैं, we forget lifetime after lifetime, पता नहीं हमने क्या पाप किए होंगे. बट कृष्णा इतने दयालु है, वो कभी नहीं भूलते जो अगर एक भक्त है, उन्होंने सेवा की है. he will always try to create an environment for you where spiritually you will grow. So always think of, and it's the essence of Krishna consciousness. Always think of me.
become my devotee, offer your obeisances to me, and my dear Arjun, you will come to me because I promise you this because you're my dearmost friend. So Krishna हमको सिखा रहे हैं कि जो संबंध है गुरु और शिष्य का, it's not just teacher and student, एक दोस्ती का, एक सख्य का, एक भगवान हमारे दोस्त असली में दोस्त है, और वो हमको वादा देते हैं कि अगर हम इस मार्ग पे चलेंगे वो हमको पकड़ लेंगे। जब भी जैसे एक दोस्त होता है ना, वो जानता है आपका नेचर, ठीक है आप गुस्सा होते हो, अब क्या यू नो यू हैव फाइट्स और समथिंग, बट आपका दोस्त आपको कभी नहीं छोड़ता है। आपका जो रियल बेस्ट फ्रेंड है, ही विल ऑलवेज पुल यू बैक, इसे यार तू क्या अनकंडीशनल कर रहा है। अनकंडीशनल आपका अटैचमेंट होता है, और वही असली दोस्त है। जहां पर कंडीशन आ जाए, जो एग्जैक्टली आपको जजमेंट करे ना करे, वही तो असली है। हाँ। यूजुअली और जजमेंट, कभी कभी जो दोस्त होते हैं ना, उनका जजमेंट भी जरूरी होते हैं। यार तू ऐसे क्यों, व्हाई आर यू स्लैकिंग, यू नो व्हेन you're slacking, then Krishna will come and say ये तू क्या कर रहा है, यू नो पुल अप योर सॉक्स। और कभी कभी दोस्त का प्यार भी चाहिए होता है, भाई तू क्यों रो रहा है, आजा मुझे गले लगा लो, ऐसे। Krishna, that's the thing, people don't realize that God is your greatest friend, he's your greatest well wisher. They distance themselves. So when you study the Gita, when you study spiritual literatures, you realize that great devotees, जो pure devotees है, उनके लाइफ में मुश्किलें आते हैं क्यों, ताकि उनका जो संबंध है, उनका संबंध कृष्ण से जुड़ पाए। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गीता में 2 बार वर्णन आता है, और इसमें बेसिक व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कैप्चर्ड इन दिस one shloka. And the last one, which is my really favorite, is because Srila Prabhupada in most of his lectures, he always says this. He says, Ishvara sarva bhutanam hridesha arjuna ithistiti, कि कृष्ण सबके हृदय में है। तो कृष्णा is sitting in everyone's heart, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो एक पहाड़ हो। कृष्णा, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जो पहाड़ थे उनके पंख होते थे, वो उड़ते थे, और उनको श्राप लगा, इसलिए उनके विंग्स को काट दिया और वो बैठ गए नीचे। So the spiritual world is so fascinating because in the spiritual world Krishna is in everyone's heart. So हमको ये इस जब भी हम ये बहुत मुश्किल है to see God in everyone's heart, especially people who cause us pain, people who disturb us, people maybe even just have cultural difference. It's so difficult to see God in their heart, but that is the truth. Ishvara sarva bhutanam hridesha arjunethastiti. So when Prabhupada is our Acharya, founder Acharya, at the age of retirement, he left everything. He left Vrindavan. He jeopardized his retirement, and he went to the United States of America, in the worst place ever, where Maya is so high, to save people. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको रियलाइज हुआ कि इनके भी हृदय में, ये जो लोग दारू पी रहे, इनके भी हृदय में कृष्ण है। तो अगर मैं इनको नहीं मैं इनको बचाऊंगा नहीं तो कौन बचाएगा। So we have to really, सबसे पहले डिसिपल जो है वही थे उनके, जो ड्रगिस्ट थे, सेक्स वर्कर थे, उन्हीं को सबसे पहले all the ट्रांसफर hippies, all the hippies. So it's very important to always be conscious that all souls are beautiful. Krishna is in everyone's heart. तो जब आपको ये विजन होएगा, you will be less disturbed. जैसे आपके बॉस ने हमें कुछ कहा, but sometimes you have to, when you the spiritual concepts awaken, then you're like, okay, my boss is also Krishna's heart. What is Krishna trying to teach me? Krishna is trying to teach me maybe to be a little bit more tolerant, and I should do my service a little. So ऐसे चीजें awaken your conscious character. मतलब आप में awaken होता है कि कैसे मैं और kind बनूं, कैसे मैं और compassionate बनूं, कैसे मैं और सेवा करूं. How do I become more useful in the mission of sharing Hari Naam, Hari Katha, Krishna Katha with the rest of the world, because everybody is suffering. And they ultimately will suffer less if they understand they need to connect to a higher purpose, not just material purpose. So ये 3 मेरे favorite हैं. Great. I hope. Yeah. That will really is a great learning, and maybe the people will also. Though Gita is a very big, उसके अंदर इतनी चीजें हैं कि it touch everything actually. आपका ब्रेन से लेके, आपके थॉट से लेके, आपका
आप एक्चुअली यूनिवर्सिटी भी ना जाओ, आप या यूनिवर्सिटी भी ना करेक्ट, जाओ, आप बस गीता को सिंसियरली पढ़ लो, आप सबसे एब्सोल्युटली, बड़े स्कॉलर हो। एब्सोल्युटली ये लोगों को पता नहीं है। करेक्ट, क्योंकि लाइफ साइंस ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखो, Yes, अगर गीता के लॉज अगर आप अपने प्रिंसिपल अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तो आपको ना तो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी ना पर्सनल लाइफ में। अभी हाँ प्रॉब्लम जी, ही वहीं से होता है, सारा आपका ब्रेन थॉट का खेल है पूरा, हाँ कि जी, आपकी हाँ थॉट जी, प्रोसेस कितनी स्ट्रांग है, वो डिटरमाइन करता है योर एक्शंस। तो वही सबसे एग्जैक्टली। बड़ा है जो गीता में बताया है भगवान ने। तो अब अंतिम पड़ाव की तरफ, रैपिड फायर राउंड, जिसमें क्वेश्चन थोड़े पूछूंगा और आपको एक या दो वर्ड में देना है, और अगर इफ़ यू फील कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है तो भी कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इनर पीस और आउटर सक्सेस। इनर पीस। Okay, फेवरेट मेडिटेशन स्पॉट। वृंदावन। I know that answer. Okay, sunrise or sunset contemplations. सनराइज। Always. Heart or mind in spiritual journey. हार्ट, हार्ट, Yeah, हार्ट। absolutely. Okay, simplicity or elaborate rituals. सिंप्लिसिटी। Okay, nature walk or temple visit. ओहो, ये तो बहुत। वृंदावन एक मंदिर है, तो मैं कहूंगी नेचर वॉक, और No, वृंदावन एक फॉरेस्ट है। okay, but anyway, this is nothing like you can say both. That's not like only any one you have to choose, but that's how. Okay, next, silent retreat or group chanting. ग्रुप चैंटिंग। Okay, universal truth or personal revelations. यूनिवर्सल ट्रूथ। Okay, light worker or seeker of light. सीकर ऑफ लाइट। Okay, okay, आलू पराठा और सलाद. आलू पराठा। Okay, great. I thought you will give this answer being a Punjabi family. आलू पराठा कौन छोड़ेगा? Absolutely. सैलेड तो खाते ही रहते हाँ, हैं। करेक्ट। इंडिया और कीनिया, टफ चॉइस। ओहो। भाई, ये तो वो आंसर है। अगर मैं कीनिया बोलूंगी तो इंडिया लोग खराब लगेगा, अगर इंडिया बोलूंगी ठीक है, यही बोलती हूँ दोनों। बट वैसे मेरा दिल तो वृंदावन में ही है। हाँ यार, एब्सोल्युटली, वो तो होना ही है। श्री कृष्णा और राधा। राधा रानी। राधा रानी, ग्रेट। तो आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, और इसी के साथ मैं ये कन्वर्सेशन को भी एंड करता हूँ। राधिका देवी जी, आपने जो है, सॉरी, हरिकांता देवी जी, कंदन देवी जी। आपने जो है अपना टाइम दिया, इतने लंबे समय चेंज करने के बाद आपका टाइम मिला, उसके लिए मुझे कोई रेगरेट नहीं है, क्योंकि जो बात मैंने आपसे करी है उससे बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया। और मेरा यही है कि मैं हर हर स्पिरिचुअल टॉक से कुछ ना कुछ मुझे लर्निंग होती है, मुझे होती है, मेरे व्यूअर्स को भी होती होगी 100%, और उसका बड़ा बेनिफिट मुझे अपनी लाइफ में मिलता है। वही मेरा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समय देने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड सॉरी कि आपको इतना आपको मुझे चेस करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी, but we're trying to serve everyone. So thank you, and thank you for your amazing service you're doing in Norway. It's so wonderful to touch people's heart there with Sanatan Dharma, with spirituality, with Krishna consciousness. So thank you so much, and all the best to you in your wonderful journey. Hopefully हम वृंदावन में मिलेंगे। बिल्कुल हरे मिलेंगे, कृष्णा। बिल्कुल मिलेंगे, और आगे भी हो सकता है कि वी विल कंटिन्यू सम टॉक, सम स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसा मैं यूजुअली करता हूँ। जो मेरे से यूएस से वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वो भी यही करते हैं कि हम वी टॉक्स सम स्पेसिफिक टॉपिक, तो वो भी मैं आपसे समय लूँगा, और वी कैन कंटिन्यू दैट दोज कन्वर्सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much.